The art of letting go. You type these 5 words in any search engine and see what comes up. From poems to movies to novels to research articles and whatnot. Letting go is one of the most written upon topic in the world of self-help and mental well-being. Yet it is one of the most challenging and at times backbreaking decision to make, at least at some point in time in our lives. KemPsych is humbled and honored to have two of the most distinguished names in the world of human psychology with us this evening, taking us step by step in mastering the art of letting go. We have with us our very own Dr. Iram Zehra Bokharey, Chief Clinical Psychologist, Mayo Hospital Lahore, and our worthy guest speaker this evening, the renowned clinical psychologist, Dr. Urooj Sadiq, the Head of Department of Professional Psychology, Bahria University Lahore Campus. Thank you so much, Dr. Iram and Dr. Sadiq, for giving us the honor of hosting you this evening. We are extremely honored and delighted to have you both in one frame. I think we are all, I am at least very happy with to be with you all. And let's look forward to a discussion of bilateral sharing and learning from each other. Yes, inshallah. Thank you so much, Shiza and team KemPsych. Thank you so much for inviting me, and I am really feel honored to have a talk with Dr. Iram Bukhari, and we may be enlightened with her wisdom as well. I think we'll all be enlightened with each other's experiences and wisdom, Dr. Urooj. Thank you so much for your kind remarks. You're welcome, ma'am. So let's start with today's topic, the art of letting go. The dialectic of holding on and letting go is the dialectic of life and death. But do all life situations demand letting go? There are times when holding on seems the best possible option. So how does one know that it is time for holding on or letting go? Or when is it that one should let go? I'll start with you, Dr. Iram Bukhari. Right. So Shiza, basically, as you said that, when you type these words, a host of things come forward. Basically, I think it's a very pertinent question, holding on and letting go. The very names would suggest that we would let go, try and let go of the things which have a negative connotation for us, and we would want to hold on to things which have a positive connotation. Let's say, generally speaking, so to the start of discussion, let's keep this in mind, and then as it unfolds, we can discuss other complications too in this. Basically, when we talk about letting go, it is an umbrella term which basically says that letting go is a kind of a surrender, as it's Hawkins' concept, and he's written a book on that as well. And it is also William James' concept, termed as father of clinical psychology. So a father of psychology, sorry. And it basically entails that whatever is happening in life, because we cannot control events and people and situations more often than not. So whatever goes on in life, we have to accept that in order to resolve that. So basically, when we hold on to things which are positive, that gives rise to maladaptive emotions and thought patterns. But when we hold on to things such as grudges, hatred, resentments, they become an inner block towards our personal happiness, our personal goals, and they even hamper our mental and physical health. So letting go is an umbrella term, and
to my mind, and Dr. Urooj can enlighten us further, two things come under that. One is the surrender, as I say. Surrender means not really behaving like a victim. It doesn't mean that. It just means that you, in a kind of loving detachment, as we call it, that you try to accept whatever goes on around you, without trying to control things too much. Because as we progress in our life and in our years, we understand that there's not much that, situation-wise, that we can control. So basically, your question was that whether to decide, and when to decide whether we need to hold on or to let go. So whenever we feel that, things that we are holding on to are comprising basically of negativities, such as hatred, such as grudges, and, even if we want to hold on to them, it is not going to lead to any positive consequence. And it is having a negative impact on our health and our general functioning, then it's imperative to let go. Having said that, Shiza, a lot of people, readiness to let go matters a lot. And a lot of people, when we tell them to let go, they're not ready for that. So personal readiness is very, very idiosyncratic. It's very individual, and we should only work with the person on letting go when he or she allows. Right. Would you like to add something, Dr. Urooj? Yes, sure. As Dr. Iram just discussed, whatever affects you negatively, you should let it go. And the things which are not that much negative, and they are like some kind of neutral effect on it, because there are so many things which are neither positive, neither negative in our life. As like there is nothing black and there is nothing white. There are some gray areas. With those areas in relationships or in opportunities or anything, like we can adjust with them, we can cope with them. And if we are able to survive with them, then we can hold them on. But still, I would also go with Dr. Iram's point of view, like anything that affects you negatively, affecting your functioning, affecting your psychological functioning, academically, affecting you academically, your interpersonal relationship, whatever it is, I think we should be strong enough to decide that we should let this thing go. Either it can be a relationship or any opportunity or anything else. After deciding that we are going to let this thing go from our life, we have to make certain compromises also, because it's not easy to let things go. Okay, many times it happens that we are adjusted to those things. हम उन negative connotations के साथ भी जो है हमारी personality got adjusted. तो उसके लिए we have to prepare ourselves that we are going to let this thing go. It may be our job, it may be our house, it may be our relationship. Secondly, when we are deciding to let things go, हमें कुछ चीजों को देखने की जरूरत होती है. If we are talking about relationships, sometimes it happens in our general relationship, not talking about any intimate kind of relationship, we have certain groups of friends. If you see in your life, you are being a student, with one group we may be enjoying having fun. ठीक है, एक ग्रुप के साथ हमें अच्छा लग रहा होता है कि we are hanging out with them. कुछ certain friends होते हैं जिनके साथ हमें सिर्फ जो है ना वो एक बात करने में we feel good, but उनको शायद let go करना या उनको छोड़ देना हमारे लिए इतना difficult नहीं होता. वो relationship जहाँ पे हमारी emotional sharing होती है ना, where we are sharing our emotions, you will also find yourself in some situations. Many I'm talking generally about the students के कुछ friends के साथ हमको लग रहा होता है we misperceive them at times.
कि हमको लग रहा होता है because we are having fun with them, we are enjoying with them, तो इसका मतलब he or she is my best friend, और he or she, I cannot survive without that person. But actually जिनके साथ, लेकिन हम जब emotional content पे आते हैं तो we are unable to share something emotional with them. We do not find them very much emotionally or morally supportive because we are habitual of having fun with them. तो वो relationships let go करना हमें temporarily लग रहा होता है कि शायद it is difficult, लेकिन वो इतने difficult नहीं होते. लेकिन जहाँ आपकी emotional closeness आती है, और यहाँ पे मुझे लगता है for students यहाँ पे ना कुछ misperceptions develop हो जाती हैं कि हमको लग रहा होता है कि जिसके साथ हम fun time spend कर रहे हैं या जिनके साथ हम interest share कर रहे हैं, those are our best mates, और हम उन्हीं में stuck होके रह जाते हैं. तो इन चीजों की बेसिस पे वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्या चीज लेट गो करनी है, किस बेसिस पे हमको लेट गो करनी है, किस बेसिस पे वी हैव टू होल्ड देम ऑन. ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि ओवरऑल यही पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर आपको ये लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है, तो आई थिंक हमें उसको लेट गो करने के पेन को बर्दाश्त कर लेना चाहिए. उसको टॉलरेट करने के लिए थोड़ा सा हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. और जो चीज आपको पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है ये भी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल आपको देखना होता है इन अ लॉन्ग टर्म. अगर वो कोई चीज आपको पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पॉजिटिव हैं, तो आपको उसको होल्ड ऑन करना चाहिए. इवन आई एम नॉट सेइंग कि जो चीज आपके लिए पॉजिटिव है उसमें 100% यू हैव एवरीथिंग विच इज पॉजिटिव, उसके अंदर भी नेगेटिविटीज होती हैं, बट स्टिल आपको फिर वहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जरूरत होती है. तो दिस इज फ्रॉम माय साइड. Right. So you are suggesting that we weigh the positives and the negatives, and then we analyze for ourselves what we want to do in this case. So as Dr. Iram suggested, that you need to accept it first in order to let it go. So does the 5-stage model of grief, that is of denial, anger, bargaining, depression, and then acceptance, apply in this scenario too? Yeah, so if you're asking me, that is. Shiza, are you asking me this question? Yes, please go ahead. All right. So, so basically, yes, these stages of Kubler-Ross, they apply a lot, not only clinically, but also in generally, we all go through them when we have bereavement or grief. Basically, you know, in a nutshell, अगर हम इसको भी छोटा करके देखें in stages को, तो initially there is a stage of numbness or denial which lasts from minutes to hours. Normally, very pathological cases में सिर्फ होता है कि वो days पे चला जाए. But that is followed by then protest, you know, a kind of despair and feelings of anger, resentment. बाज़ दफ़ा किस्मत पे, बाज़ दफ़ा कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया. In case of death, for instance, or a relationship failure too. And then you come to resolution phase. So as far as हम जो बात कर रहे थे letting go की, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. जैसे डॉक्टर अरूज ने हाईलाइट किया, बाज़ दफ़ा you have financial setbacks and you have to let go of your home, for instance, or some property. That's also a loss. I would like to talk specially what I tend to see clinically, and those are not just like patients. They are young people. They have post-relationship grief called PRG, or you know, sometimes loss of relative via death, and they find it very difficult to let go. So when we are trying to resolve grief, there is a process which is called mourning. So mourning in psychology refers basically to the emotional processing that goes on in a person's mind to review the entire relationship that he or she has had with the gone person, चाहे वो death से हो या वैसे departure से हो,
जैसे ब्रेकअप वगैरह हो जाता है. एंड इट्स नॉट जस्ट ओनली अ रोमांटिक रिलेशनशिप. बाज़ दफा बहन भाइयों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सालों नहीं बोलते. So I'm talking about every relationship. So basically we have to then, whenever we are talking about a relationship failure, तो उसमें या loss, तो उसमें जो mourning का period है उसके अंदर we not only we do 2-3 things. Number one, and it's a necessary part of emotional processing. वो तो क्यूबलर-रॉस की स्टेजेस बहुत अप्लाई करती हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और हम उन्हीं को देख के काम करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई पेशेंट किसी स्टेज पे होता है, कोई किसी स्टेज पे होता है. So there are different techniques that are used with that. Mourning में the person essentially goes through, reviews the entire relationship after it has terminated, and comes up with the positives and negatives, moments or incidents in that relationship. And after that, he or she tries to loosen the bond between himself and the person who is left. Once that happens, then we can arrive at the stage of resolution. Jisme ke you make peace with the loss, and then you move on. You can develop the same ties with somebody else, or अगर आपका कोई parent की जैसे for instance death है, बहुत इस तरह commonly हम देखते हैं, तो you give your life a new meaning in that. लेकिन शिज़ा एक बात है कि ये stages तो बहुत applicable होती हैं, ये mourning का process लीडिंग टू क्लोजर भी इम्पोर्टेंट है. लेकिन जब हम लेटिंग गो की बात करते हैं ना, तो दैट इज समथिंग इन विच द पर्सन हैज टू बी प्रिपेयर्ड. सो अगर हम इन स्टेजेस की बात करें जो फॉरगिवनेस या लेटिंग गो या सरेंडर की होती हैं, तो उसमें एक फेज तो जो होती है ना, वो होती है कि एक किस्म की अनकवरिंग फेज, जिसमें ये होता है जो मैंने आपको भी मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया कि यू रिव्यू the entire situation, and you also review how the end of this relationship has impacted you in a negative way, both in physical terms. बाज़ दफ़ा आपके circadian rhythm, बाज़ दफ़ा circadian rhythm, biological rhythms disturb हो जाते हैं in psychological sense and in spiritual sense as well. उसके बाद एक decision phase आता है. Forgiveness is not something which you can thrust upon a person. For instance, one of my colleagues some time back saw this case of incest, and she said कि आप माफ कर दें उनको. So this person was so traumatized. जिनको कहा गया कि माफ कर, she wasn't there ना, she was not ready, she hadn't decided to let go. तो पहली आ गई अनकवरिंग का फेज है, फिर आपका डिसीजन फेज है. टेक द डिसीजन to either forgive or not, and if a person doesn't want to forgive, you can't really force it down his or her throat. फिर आपका if the person agrees, तो फिर आपका वर्क फेज आता है, जिसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं. और एंड का जो फेज है वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, और उसको डीपनिंग फेज कहते हैं. और डीपनिंग फेज का मतलब ये होता है कि after the loss, and when we gather ourselves, when we become more harmonious and make peace with the loss, sometimes we experience an existential growth in which we become a much better, more resilient person than ever before. तो ये फेज जो होती है लास्ट फेज होती है, और इसमें you transcend from the personal plight and you move forward and you learn something new. That sounds very interesting. And what is the time frame over which these phases last? आप मुझसे पूछ रही हैं? Yes, ma'am. Right. So, Shiza, grief एक ऐसी चीज है कि usually in contemporary America हम कहते हैं कि few weeks में ना the person is expected to resume academic studies or resume his job, or in about 6 months or so
between 6 months and 1 year, वो कहते हैं कि बंदे को वापस अपनी मतलब जिंदगी में वापस आ जाना चाहिए, as in pursuing, अगर death of spouse है तो pursuing a new relationship or something, contemplating about that and moving forward. However, हमारी part of the world में अगर आप देखें, हर जो ट्रेडिशन होती है ना, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि उसके पीछे एक विजडम होती है सोशल। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है चेलम का या 40वां का, वो उसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये है कि जब तक 40वां नहीं हो जाता, रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं, जुमेरात को ख़त्म करवाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड सिंस साइकोलॉजी बिलीव्स दैट ईच क्राइसिस इज सेल्फ लिमिटिंग, तो वो जो 40 दिन के बाद वो बंदा भी तैयार होता है कि अब मैंने खुद मैनेज करनी है चीज़ें, सिर्फ क्लोज रिलेटिव आएंगे। So in contemporary America as well as ours, so it can take a few weeks. Some people say it can take between 4 and 8 weeks. At times it goes to 12, but agar wo isse zyada badh jaye, like 6 months for children or agar 1 year for adults ho jaye, so it becomes complicated grief, pathological, chronic, complicated grief. So a few weeks basically. Right. This concept of the 40वां is very interesting to hear in terms of the light of psychology. Thank you so much, ma'am. Dr. Urooj, what would you like to say on this? I think जो एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, या जो I have seen among my relatives or the patients came to me with the denial, मतलब with the during grief, after a loss, just after a loss, उसमें जो प्रॉब्लम होती है शिजा, वो हमारे यहाँ लोग जो है ना वो जंप इन करते हैं कि बस फौरन एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाए, और मतलब दे आर, वो उस प्रोसेस से गुजरने के लिए मेंटली दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। मतलब दिस इज सो अननेचुरल कि आपका एक लॉस हुआ है, यू मे हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, ठीक है, आपका कोई रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, कोई आपके करीबी जो है वो आपको छोड़ के जा सकता है, या किसी की डेथ है, डेथ ऑफ अ लव्ड वन है, तो दिस इज अ लॉस। तो वो मतलब एक उनके जहनों में ये है कि बस अब लॉस हुआ है तो हम इसको फौरन एक्सेप्ट कर लें। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, और वो इन फेजेस से, क्योंकि दीज आर द नेचुरल फेजेस, दे हैव टू गो थ्रू दी डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग। किसी का, जिस तरह भी डॉक्टर इरम ने कहा, कोई किसी फेज में होता है, कुछ अगर इवन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ लव्ड वन कुछ लोग डिनायल में नहीं जाते, ठीक है, कुछ दूसरे स्टेजेस पर होते हैं। लेकिन जनरली जो एक चीज मैंने देखी अपने एक्सपीरियंस में पेशेंट्स में कि बस हमें एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स नहीं होगा एक्सेप्ट, ऑफ कोर्स, मतलब अगर आप देखें खासतौर पे पेरेंट्स की डेथ में, इवन इफ यू आर सीइंग योर पेरेंट्स आर डाइंग, मतलब वो इतनी कंडीशन उनकी है, ओल्ड एज है या बीमार है, कोई टर्मिनल इलनेस है, इफ यू नो दैट, बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट टू फेस दिस ट्रॉमा। तो वो उस जो है ना उन फेजेस से गुजरना नहीं चाह रहे होते, और उनके लिए वो चीज एक अनदर स्ट्रेसर होती है, और एक अनदर उनके लिए एक और मुश्किल हो जाती है कि वो उसको कैसे करें। तो उन फेजेस की, मेरे ख्याल से जो अगर हम लास्ट स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट्स को या लोगों को उन फेजेस की एक्सेप्टेंस भी डेवलप करनी चाहिए, कि अगर कोई डिनायल के फेज में है तो अब क्या होता है कि जी उसके ऊपर मतलब हर कोई जो है ना वो कि नहीं जी इसको बताओ, इसको एक्सपोजर दो, भाई लेट द पर्सन गो थ्रू दैट फेज, वो उससे निकल आएगा। आप उसको उस फेज से निकलने के लिए सपोर्ट करें, या उसको, या वो खुद इंडिविजुअल अपने आप को पर्सनली इतना ज्यादा प्रेशराइज कर लेता है कि वो वही कहीं स्टक होके ना उन्हीं फेजेस में रोम अराउंड करता रहता है। तो हमें इस चीज की जरूरत, इवन कि वो कोई रिलेशनशिप भी है, लाइक कोई जरूरी नहीं कोई डेथ है, कोई इंटीमेट रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो है ना यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, या चले फ्रेंड्स दूर चले गए, या लाइक के कोई डेथ है, वो भी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है, आप अपनी जॉब स्विच करते हैं, ठीक है, यू आर वर्किंग समवेयर फॉर 10 years और लाइक 5-6 years, और आप सडनली किसी भी सिचुएशन इवन विद इन द सेम सिटी, यू हैव टू गो थ्रू दैट एडजस्टमेंट फेज, आपको वहां भी मुश्किल हो रही होती है,
आपने जिन लोगों की वजह से वो जॉब या जिन रीजंस की वजह से वो जॉब क्विट की है, उन चीजों पे आपको गुस्सा आ रहा होता है, आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं, आप यू टेक टाइम। तो आई थिंक कि हमें ये समझने की जरूरत है, एनीथिंग कुछ भी है, हमें उस एक्सेप्टेंस के एक्चुअल एक्सेप्टेंस के जो हम कॉबलर रॉस के फेजेस की बात कर रहे हैं, उस स्टेज 5 पे आने से पहले हमें हर स्टेज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हम डिप्रेशन में भी जाएंगे, हमें एट टाइम्स एंजाइटी भी होगी बिकॉज ऑफ दैट लॉस। जिस तरह अभी डॉक्टर इरम ने बात की कि आपका फिजिकल रिदम आपका डिस्टर्ब होता है, हम नींद से उठ के जो है ना वो अचानक डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें नींद नहीं आ रही, एवरीथिंग दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो उन सब चीजों की एक्सेप्टेंस डेवलप करना जरूरी है, साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी। और जिस तरह बिल्कुल हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम तो बेहतरीन है, जिसको अब हम कहें कि हम इसको कह दें कि ये कल्चर है या जो भी कहें, बट इट हैज अ वेरी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स। खासतौर पे जब हम डेथ्स की बात करते हैं या इस तरह के कोई मेजर लॉसेस होते हैं, ऑल्दो कि आप उस बंदे को वो लोग वापस नहीं ला सकते, या अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो आपको फाइनेंशियली कितना कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन जो आपके साथ एक मॉरल सपोर्ट, जिनके साथ आप इमोशनल कैथारसिस कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, दिस मैटर्स अ लॉट। और यही चीजें ग्रेजुअली, अगर आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब नहीं है, सो इफ यू आर नॉट सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, तो यही चीजें ग्रेजुअली आपको इस फेज से जो है ना वो you are able to cope with this and you ultimately come out of this. That was very beautifully explained, Dr. Urooj. So I think one of the take-home messages of today's talk is that one is acceptance of the loss and the other is acceptance of the stages of going through that loss. So if we just understand that, it will be a lot easier for us to go through it. You just talked about the social support we have in our system. The same society can at times be troublesome for the person who is trying to let go something. For example, in the society we live in, if someone is stuck in a toxic marriage, the family, the society will try their level best that that person holds on to it and doesn't let it go. So in such cases, when the decision solely does not lie with that person who is going through that trauma or the toxic relationship or experience, what should the person do? Over to you, Dr. Iram. Okay, so basically that is a plight that we tend to experience just so very often. I still remember one of my patients, a professor and a PhD, told me that I have to take 2 Prozacs to tolerate my husband, and she'd been taking it for over the years. So at times, but she didn't want to, sort of disrupt the peace of her parents, and they did not want her to take divorce. She had 2 sons, so basically, ये इसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है, जैसे डॉक्टर अरूज ने शुरू में बात की थी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की. देयर इज नो सच थिंग एज एन आइडियल डिसीजन एवर, बट इफ यू आर इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, मे इट बी अब्यूज ऑफ एनी काइंड, तो आपको ये देखना पड़ता है कि whether carrying on with this relationship is going to impact me in a very, very negative way, emotionally, physically, har tarike se. Also mentally, obviously. So this person was also suffering from major depressive disorder, proper. And that's why she was seeking therapy and all of that. So मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है. कुछ औरतें हमारे पास आती हैं ऐसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में. मैं औरतों की खुद ब खुद बात करनी शुरू हो गई हूँ, because that's my experience, and I realize that of course other way around भी होता है, but I tend to see them more often and come across them more often, and they are also, I feel, marginalized, especially if they are financially underprivileged.
हमारी सोसाइटी में अगर उनको अक्सर माएँ कह देती हैं कि अभी तो तुम्हारी 2 बहनें और हैं। मुझे ऐसा लगता है शिज़ा कि जब हम एक रिलेशनशिप को आई बिलीव दैट हर रिलेशनशिप का ना एक अपना टेन्योर होता है और और उसकी क्वालिटी का भी एक टेन्योर होता है। और अगर हमने उसको अलाइव रखना है एक रिलेशनशिप को और उसको फंक्शनल रखना है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस्ड रखना है तो यू गॉट टू नर्चर इट वेरी फ्रीक्वेंटली। जैसे कोई पौधा होता है ना, आपको उसको पानी भी देना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, फिर वो दरख्त बनता है। तो अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको यू नो इट्स ईटिंग अवे मोर देन इट इज नर्चरिंग यू, तो मुझे एट अंडर प्रिविलेज्ड लोगों में तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। Because when I was working in Gangaram hospital, I had this woman who came to us with a suicidal attempt, and she was beaten by गांव में वो रहती थी तो जो लकड़ियां नहीं होती जिससे आग जलाते हैं, उससे her husband beat her up, तो she had a fracture. So she went to her parents' place और वहाँ she was beaten up more by her brothers, at which point she attempted suicide. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। लेट्स से अगर हम इस क्लास की ना भी बात करें, वैसे इनके लिए अब कुछ सोशल वेलफेयर इदारे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब्यूज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आपको नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू पे द टोल थ्रू योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी में इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है और बाज़ दफ़ा आपको उससे फिजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, हाइपरटेंशन, you know, cardiac issues and all of that. Now, if we talk about, for instance, this professor that I talked about, and then so many other people, तो वहाँ पे हम उनको, of course, we cannot take decisions for anybody because it's their life. पर वहाँ पे हम उनको उनकी जो options है ना वो बहुत facilitate करते हैं. It can start with assertive training, you know, that they can start speaking up for themselves. Then, as Dr. Urooj just pointed out, it can then lead to forming a support group. Close family members, हमारे यहाँ family institution बड़ा strong है, लोग आ जाते हैं. अगर unfortunately वो family ना करे तो फिर भी आपके पास एक ऑप्शन रहती है कि आप उस बंदे को ये वार्न कर सकते हैं कि then we part ways. ये ऑप्शन आपके पास रहती है। लेकिन हमारे कल्चर में अब चीजें बदल रही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चाहते हैं कि they would rather linger that marriage and work around it more rather than, you know, doing something tangible which leads them to more authenticity and which helps them preserve themselves as individuals. Right. Your take on this, Dr. Urooj? Thank you, Shiza. Thank you, Dr. Iram. मैं इसमें बिल्कुल I would add like कि बिल्कुल ये situations हमारी socially and culturally बहुत disturbing हो जाती हैं, and during clinical practice it is really difficult कि हम उनको किस तरफ लेके जाएं. Although as Dr. Iram said कि we cannot decide for themselves, but still we have to indirectly we have to take them towards a single direction ताकि वो अपनी life तो ठीक कर सके. बट स्टिल मैनी टाइम मतलब हमारे यहाँ एक और चीज होती है कि जी तुम्हें तो अपना शौहर मिल जाएगा, बच्चों को बाप नहीं मिलेगा. इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर दोज वुमेन हैविंग किड्स. उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है. बट स्टिल जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, और यू शुड डेवलप सच अ स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ. जिस तरह हम डॉक्टर इरम बात करिए कि हम उनको असर्टिवली उनको ट्रेन करते हैं, उनको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, और स्पेशली अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट टू मच डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स. और बाज़ दफ़ा फीमेल्स जो है वो इस वजह से भी नहीं छोड़ना चाह रही होती कि दे हैव अ शेल्टर, उनके बच्चे स्कूल अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल कोई मसला नहीं है. और मैनी टाइम्स जो है वो ऑल्दो एज डॉक्टर इरम डिस्कस की जी ये बोथ वेज होता है. मैंने बहुत सारे ऐसे मेल्स भी देखे हैं जो खुद
भी अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं और वो खुद वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी तरह इसको चलाते रहें, बट स्टिल जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है इट्स मोर ऑन अ पार्ट ऑफ अ फीमेल, तो वो उस चीज को भी नहीं छोड़ना चाह रहे होते। बट स्टिल आई थिंक कि अगर कोई चीज आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो अनहेल्दी या टॉक्सिक रिलेशनशिप को मेंटेन करना इट्स नॉट गुड फॉर यू नाइदर फॉर योर चिल्ड्रन। उसके अंदर बस एक चीज जो हमें रोकती है इन सारी चीजों से वो ये है कि लेटर ऑन ये चीजें फिर यहाँ खत्म नहीं होती, फॉर स्पेशली फॉर दोज फैमिलीज हु हैव किड्स। ये चीजें क्योंकि आपके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो चुकी होती है एक दूसरे को तंग करने के लिए, एक दूसरे के अगेंस्ट जाने की, तो वहां पे फिर चाइल्ड कस्टडी पे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए शायद जो है वो हमारे कल्चर, क्योंकि इसका सारा इफेक्ट जो है वो बच्चों पे आ रहा होता है। आई हैव सीन क्लाइंट, एक लड़का था, आई थिंक ही वाज A-levels स्टूडेंट, और वो मेरे पास आया, वो डिप्रेशन में था, सिवियर डिप्रेशन में था, और उनके पेरेंट्स की अभी डिवोर्स नहीं हुई थी, दे वर सेपरेटेड, और उसमें जो है जिस तरह हम द अदर वे राउंड की बात कर रहे हैं कि फादर वाज अ मेन विक्टिम एंड मदर वाज वेरी अथॉरिटेटिव काइंड और एवरीथिंग, तो वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि वो उससे ना पढ़ा जा रहा था, ना उसके अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन हो पाते थे। वो आया भी अपने फ्रेंड के साथ था और वो अपने पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहा था, बट कुछ केसेस में ऐसे होता है कि हमें जो है वो पेरेंट्स को ऑफकोर्स इन्वॉल्व करना पड़ता है, कुछ उसकी सुसाइडल टेंडेंसीज भी थी। व्हेन आई टॉक टू हिज फादर ही रिफ्यूज्ड टू कम फॉर हिम, व्हेन आई टॉक टू हिज मदर his mother refused to come to me कि नहीं जी हम नहीं आ सकते, बिकॉज उसका बाप नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आ सकती। तो इस तरह की चीजों में ना बच्चे इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो शायद अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, वो अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, लेकिन इफेक्ट पॉइंट इज कि आपको उन टॉक्सिक रिलेशनशिप का करना क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे कोई फीमेल जो है वो इंडिपेंडेंटली चीजों को कर सकती है और वो इस प्रेशर को बेयर कर सकती है। बात सारी है हमारे कल्चर में आपको प्रेशर्स भी बेयर करने पड़ते हैं, ऑल्दो हमारे यहाँ सोशल सपोर्ट कल्चरली हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन जो है ना हमें प्रेशर जब बेयर करने पड़ते हैं, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर डिटरमिन्ड इनफ टू बेयर दोस प्रेशर, तो फिर आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। और फिर ये तो ऑफ कोर्स एक जो कल्चरली देखते हैं, एक अंडरस्टूड सी बात है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो ठीक है हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट फादर करते, लेकिन ब्रॉटअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर पर ही होती है और ना वो उसको छोड़ना चाहती है एक मदर जो है वो उसको। तो इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो आई थिंक कि हमें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जो है वो उनको मजीद एम्पावर करने की जरूरत है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को प्रोलॉन्ग करना हेल्दी नहीं होता। Absolutely. So अगर कोई बंदा strong enough नहीं है तो before taking such a decision, shall he or she take some therapy or training to become mentally strong enough to take such a decision? Dr. Urooj? उसमें शिजा देखें, जिस तरह अभी डॉक्टर इरम भी बात कर रही थी कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि उसके पर्सनालिटी के क्या फ्लॉज हैं, हमें ये भी देखना है कि अगर वो अंडर प्रिविलेज, जिस तरह अभी अपनी पेशेंट की डॉक्टर इरम ने बात की, तो उसके लिए तो कोई भी चीज नहीं है ना, उसके लिए हमारे यहाँ शेल्टर होम्स और ये सारी चीजें ऑल्दो दे आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, मगर वो इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड नहीं है। ठीक है, एक तो मतलब वो असल जो रियलिटी ऑफ लाइफ है कि अगर वो बाप के घर आती है तो वो ज्यादा अब्यूजिव सिचुएशन है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए हमको ये डिसीजन लेना होता है कि हम किसको एम्पावर करें किसको ना करें। बाज़ दफा हम इतनी मुश्किल में फंस जाते हैं कि हम पेशेंट्स के साथ कैसे मैनेज करें या उनको हम किस तरह से करें, लेकिन स्टिल हमें उनकी सिचुएशंस देखते हुए उनको ऐसा कोई करना होता है, क्योंकि कोई भी नॉट ओनली ये रिलेशनशिप के इश्यूज नहीं है, हमें कोई भी चीज उनको सजेस्ट करते हुए, कोई भी और डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई पेशेंट हो, तो हमें उनकी हर चीज को देखते हुए चीजें सजेस्ट करनी होती हैं या हर चीज को देखते हुए उनको एक डायरेक्शन इनडायरेक्टली जो है ना वो देनी होती है। हम हर फीमेल को जो है ना वो इस तरह से हो सकता है कि अगर हम किसी ऐसी फीमेल को एम्पावर करने की कोशिश करें जिसकी सिचुएशंस उसको उस तरह से सपोर्ट ना करती हो, तो वो उसके लिए और नुकसानदेह भी हो सकता है।
Right. So it's all very subjective. It is said that every decision in favor of something is a decision against something. So, while taking a decision, one thing that bothers every one of us is the what ifs of that decision. And one of the greatest what ifs is what if we regret this decision? So, while taking the decision of letting go, how should one deal with this what ifs of this decision? Dr. Iram. So, Shiza, what if is a cognitive error in cognitive behavior therapy? What if is cognitive errors जो होते हैं ना वो they are like virus in your thoughts. जैसे हमारे अब कोविड आया हुआ है उससे पहले और मतलब वायरल डिजीजेस होती हैं अगर हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल वायरस आ जाए आप डॉक्टर बन गई हैं ऑलमोस्ट सो you know we try to get rid of that immediately, right? So what if जो है ना that is also a cognitive error जो international list है ऐसी thinking virus की negative trends in thinking हम उन्हें cognitive error या cognitive distortion कहते हैं तो उसमें एक what if भी है क्योंकि अगर हम what if में फंस जाए ना आप तो decision making की बात कर रही हैं. So the first thing, what if phenomena अगर हम ज़्यादा experience करें, तो we should know that we have to use some technique to get rid of this. If you want, तो मैं बाद में आपको बता भी सकती हूँ. But इस वक्त ये जो what if वाला phenomena है, ये इसलिए आता है because there's no such thing as an ideal decision ever. Whatever decision we take as individuals, or a family takes as a family, or a society, even your political system, if that takes a decision, it will always have a loop side, a downside to it. अच्छा जो एक हमारा general principle है to take a decision, वो ये है what ifs तो होते ही रहेंगे. मतलब मैं drive ही ना करूँ ये सोच के what if I have an accident. तो एक तो बात ये है कि जिंदगी जो है वो possibilities पे नहीं probabilities पे चलती है. Possibility हर negative की हर वक्त है. You know, there is a possibility that if I drive, I'll have an accident. So I'll be, you know, I have driving phobia. There is a possibility if I fly, I'll, you know, plane would crash. तो फिर मुझे एरोफोबिया हो जाएगा. तो इसलिए जिंदगी हमेशा हमें यह याद रखना चाहिए कोई भी फैसला करने से पहले कि the life is governed on probabilities and not possibilities ever. Possibility हम eradicate कर ही नहीं सकते. वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी. दूसरी बात कि जब हमें डिसीजन करना है तो हमें उसको उसके जो जैसे डॉक्टर उरूज ने पहले कहा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका हमने करना है. अच्छा उसका तरीका ये होगा जो एक टेक्निकल तरीका है उसका कि आप देखेंगे कि मैंने इस शादी में रहना है कि नहीं या मैंने ये चीज़ लेट गो करनी है कि नहीं. आप उसके पॉजिटिव्स लिखेंगे और नेगेटिव्स लिखेंगे और फिर हर पॉजिटिव को आप 100 में से नंबर देंगे. यू विल असाइन अ परसेंटेज टू दैट. और परसेंटेज भी नहीं सिर्फ नंबर्स लिखते हैं, राइट? एंड एट द एंड यू विल राइट अ कंक्लूजन. आप देखें कि नेगेटिव ज्यादा है क्योंकि हो सकता है कि किसी एक चीज के नेगेटिव 8 हों और पॉजिटिव 4 हों लेकिन पॉजिटिव बहुत वेटी हों. You know, they carry a lot of weightage and you can't really put up with that. And we always advise people to do it thrice at least, and also discuss with one close family member and one close friend or cousin. और उसके बाद फिर आप डिसीजन लें ये सोचते हुए कि इस डिसीजन की भी डाउन साइड जरूर होगी बट बिकॉज मैंने ये सोच के लिए है तो आई विल बी एबल टू डील विद इट. So we can't harp on what if, we will harp on the probabilities, not possibilities. Right. The second take home message of today. Thank you, Dr. Iram. Over to you, Dr. Urooj. थैंक यू शिजा. शिजा जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं हम जो भी जिस डायरेक्शन में भी जाते हैं देयर इज नथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है, जब भी हम किसी तरफ भी जाएं तो उसमें भी हम अगर बहुत पॉजिटिव तरफ भी जा रहे हैं या हमें लगता है कोई शख्स हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, बट स्टिल द अदर पर्सन और द अदर सिचुएशन मस्ट बी हैविंग सम नेगेटिव aspect also.
बिल्कुल आई वुड गो विद डॉक्टर इरम कि आपने अगर एक डिसीजन लिया है, यू आर गोइंग towards B, you and you have decided you are not going towards A, तो आपको B तक पहुंचने के लिए या B के साथ जितने भी associated negatives हैं, that may be less than if you would be associated with decision A, उससे कम होंगे। वो जाहिर है आपने कॉस्ट बेनिफिट किसी वजह से आपने डिसाइड किया है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, देयर आर वी हैव टू लिव विद प्रोबेबिलिटीज, जिस तरह भी डॉक्टर इरम कह रही है, पॉसिबिलिटीज या व्हाट इफ, तो फिर अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तो फिर मैं घर से बाहर भी निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई फेल डाउन फ्रॉम स्टेयर्स, ठीक है, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए आज मेरे, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ व्हाट इफ, लेकिन वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू गो फॉर वन थिंग। ठीक है, अगर हम इसी तरह रहेंगे तो हम तो बिल्कुल इनडिसाइसिव स्टेट में रहेंगे। ठीक है, और आई थिंक अगर आप और जो इनडिसाइसिव या अनसर्टेन आपकी माइंडसेट है या कोई ऐसा कोई कॉग्निटिव एरर है, वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जो आप किसी डिसीजन के नेगेटिव्स को बेयर करें। आपने डिसीजन लिया है, यू हैव टू बेयर दोज नेगेटिव्स। ठीक है, एंड इट इज फार बेटर देन लिंगरिंग ऑन बिटवीन ए एंड बी। तो ये आपको रिस्क कह लें इसको, या आप इसको कह लें कि कैलकुलेटेड रिस्क है लाइफ में, वो हमें लेना होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम उसको नहीं लेना चाह रहे होते तो लाइफ हमें खुद उस तरफ ले जाती है। ठीक है, बहुत दफा डिसीजंस हम नहीं भी ले रहे होते, मगर सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं अल्टीमेटली कि हमें वो डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं, जिसमें फिर हम अपने आप को, विच इज मैं कहती हूँ कि शायद 200% इसमें सच्चाई भी है, लेकिन एक हम अपने आप को रैशनलाइज भी करते हैं कि चलो इसमें अल्लाह की बेहतरी है, कोई मसलहत है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी टीच अवर सेल्फ के। और ये सारी सिचुएशंस ना चिज़ा ये हमारी लाइफ में साथ साथ चलती है। मतलब हम कोई भी चीज जो है ना वो एक ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कर सकते। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ जाएंगे तो हमारी लाइफ शायद उस तरह से नहीं होगी। ना ही कोई चीज 100% पॉजिटिव होती है हमारी लाइफ में, ना ही कोई चीज 100% नेगेटिव होती है। और इस बात को हम जितना जल्दी समझ लें हमारी लाइफ उतनी आसान हो जाती है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप हो जाती है बहुत सारी चीजों। Absolutely, absolutely. So some people happen to be more resisting to change. So are the personality types or the attachment styles of people, do they matter while taking such decisions of holding on or letting go? And if these attachment styles influence so much, is it possible that one can change his or her style after he has spent 20 or 30 years in that same style? Dr. Iram? All right. So, so basically, yes, very much. What we do tends to be impacted very much by who we are. So our personality patterns, our attachment styles, and, you know, to use another term quite frequently used now in therapy is our schemas, the way we perceive ourselves based on our childhood experiences, whether they are attachment styles, whether there was some kind of physical abuse or other forms of abuse. We develop certain core beliefs, certain schemas in which we view things. Now, so basically, if a person while growing up suffered parental divorce and didn't form the right kind of attachment and maybe developed a schema of abandonment, right? So when he enters a relationship, he can take three options. I'm just using this because we're talking about letting go, right? So इसलिए मैं abandonment का schema use कर रही हूँ कि let's say so there's a person whose mother would always say एक दिन हर लड़ाई के बाद she would sit her son down and tell, who later became my client, and tell her कि एक दिन मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को छोड़ जाऊंगी, right? So this inculcated a schema of abandonment. मतलब वो जो आप बात कर रही हैं बचपन की और personality patterns की. So जब schema of abandonment पैदा हुआ
तो उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि स्कीमा में हमारा कोर बिलीफ भी होता है और फिर हमारी कोपिंग स्ट्रेटजी भी होती है जो हम अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो बार बार हमें हाउंड करता है ना, रिविजिट करता है। जब हम फ्रेंड बनाते हैं तो हमें लगता है ये तो नहीं छोड़ जाएगा। फिर हमारी मंगनी होती है तो हम कहते हैं कि अब टूट तो नहीं जाएगी। शादी होती है तो हम कहते हैं डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा। सो व्हाट वी डू इज दैट वी टेंड टू adopt 3 strategies to cope with these schemas. इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि letting go हम क्यों नहीं बाज़ दफा कर रहे होते। So one person may opt for schema compensation, and he may try and give in to his wife all the time, or whatever, whoever he's close to all the time, and he may become a yes man. अब मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, एक सो दैट टेंजिबल एग्जांपल, राइट। और जिसको हमारे कल्चर में जोरू का गुलाम भी कहा जाता है, वो अगर कोई बन जाता है तो वी डोंट हैव टू मेक फन ऑफ दैट पर्सन बिकॉज ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ कॉम्पेंसेशन मोड टू काउंटर हिज अबैंडनमेंट स्कीमा। अब इसी तरह एक बंदा जो हम स्कीमा को या तो कॉम्पनसेट कर सकते हैं, अबैंडनमेंट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि लेटिंग गो की बात कर रहे हैं, तो दूसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि वी इंडल्ज इन स्कीमा सस्टेनेंस। स्कीमा सस्टेनेंस या मेंटेनेंस ये होती है कि वो जो हमारा अबैंडनमेंट का कोर बिलीफ बन गया है ना कि हर कोई मुझे छोड़ जाएगा, तो उसको कॉम्पनसेट करने के बजाय, यस मैन या यस वुमन बनने के बजाय, वो ये करे कि वो ऐसे रिलेशनशिप्स में जाए कि जो उसको पता है कि परमानेंट हो ही नहीं सकते। मसलन getting involved with married men or married women, or getting involved with people where ultimately it will not be permanent. That is schema maintenance. By the way, it's all happening at the background of our mind. ये therapy process में elicit होता है और उनको पता भी चलता है। और third strategy जो है abandonment schema की, वो ये हो सकती है कि schema avoidance में indulge करे वो, और वो एंटर ही ना करे किसी रिलेशनशिप में। वो कहे मैंने तो जाना ही नहीं किसी से क्लोज है, लेस्ट ही और मी शी में abandon me. So these are the 3 strategies that we can cope with, and if we have grown up with a certain schema. Right. Your take on this, Dr. Urooj? शिजा, बिल्कुल मैं इसमें ना I would like to share my patient's example here. I've seen a girl married to a very very abusive person, और मतलब emotionally abusive, physically abusive, मतलब उसके साथ एक तो once or twice it happens कि the person hanged his wife in a balcony, ठीक है, और उसके हाथ उसने उस बालकनी से बांध दिए और उसको बाहर की तरफ जो है ना वो लटका के रखा फॉर एन आवर और इतने सिवियर उनकी जो है ना वो। और व्हेन her parents brought her to me, और her parents wanted her कि जी she should leave this relationship, लेकिन वो बिल्कुल भी willing नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम आप अटैचमेंट की बात कर रही हैं, बिकॉज ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड इन हर पेरेंट्स रिलेशनशिप शी एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ थिंग, जो उसके अंदर एक अटैचमेंट इनसिक्योरिटी डेवलप हुई थी, और उसके अंदर एक ये फियर डेवलप हुआ था कि क्योंकि उसने हमेशा पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व किया, वो उसी तरह से बड़ी हुई, उसके कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं थे। इट्स इनफैक्ट वो जो पेशेंट थी वो हरसेल्फ, मतलब सिर्फ उसका हस्बैंड ही अब्यूजिव नहीं था, उसके खुद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी फीचर्स थे, ठीक है। और उसको सिर्फ एक चीज जो है ना उस रिलेशनशिप में रखती थी कि जब भी वो कोई सुसाइडल अटेम्प्ट्स, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में जनरली अटेम्प्ट्स होते हैं, वो कमिट नहीं करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जस्ट अटेम्प्ट्स फॉर अटेंशन सीकिंग। जब वो इस तरह की कोई अटेम्प्ट करती थी तो हस्बैंड उसको ही यूज्ड टू गिव हर अ लॉट ऑफ अटेंशन, और वो उसको बहुत टेक केयर करना शुरू हो जाता था। वो उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है। तो बाज दफा बिल्कुल आपकी अटैचमेंट इनसिक्योरिटीज इतनी सिवियर होती हैं कि आपको लग रहा होता है कि शायद अगर ये रिलेशनशिप भी मिस हो गया, क्योंकि उसके अपने पर्सनालिटी पैथोलॉजीज की वजह से उसके स्टेबल रिलेशनशिप विद पीयर ग्रुप भी नहीं थे,
लोग आते थे, उससे दोस्ती करते थे, इनिशियली बहुत ठीक चलता था। अब जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में ओवर आइडियलाइजेशन, डी आइडियलाइजेशन, स्प्लिटिंग, ये सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं, तो लोग उसको छोड़ जाते थे। तो उसको उसकी एक को डिपेंडेंसी, या जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, उसने डेवलप की थी। और वो उसकी हर नीड, मतलब उसको इतना फियर था कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो वो उसकी हर चीज को टॉलरेट कर रही होती थी, जिसको शायद दोबारा ऐसी कोई रिलेशनशिप उसकी मिली नहीं थी या आगे भी नहीं मिलेगी। यस, अटैचमेंट इनसिक्योरिटी डू इफेक्ट आपके स्कीमास, नेगेटिव स्कीमास डेवलप होते हैं आपके, जो है वो ऐसी थॉट पैटर्न आपके डेवलप होते हैं कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, को डिपेंडेंसी आपकी डेवलप होती है। और दूसरा बिल्कुल सिमिलरली एक जो है वो इंडिविजुअल था, समझ ले, मतलब ही वॉज अ वेरी वेल एजुकेटेड था, उसकी मतलब वेरी वेल जो है वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था, सब कुछ था, जॉब भी बहुत अच्छी थी, वेल अर्न जॉब थी, लेकिन ही वॉज नॉट विलिंग टू गेट मैरिड। और उसके अंदर भी इसी तरह के फियर्स थे कि उसने अपनी लाइफ में बहुत इनस्टेबल रिलेशनशिप्स देखे थे। और फिर उसको इन्हीं प्रोसेस के थ्रू उसको हमने रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए उसकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की, उसके साथ डिस्कशंस की, सारी ये जो भी उसके फियर ऑफ अबेंडनमेंट था, फियर ऑफ जो भी उसकी इनसिक्योरिटीज थी, उनको हमने इन थेरेपी जो है ना उसको मैनेज किया। तो इन द एंड मतलब वो, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो 100% विलिंग था किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए, बट एटलीस्ट ही वाज एट अ पॉइंट कि यस, यू शुड हैव अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप इन योर लाइफ। तो क्योंकि इट हैपेंस कि मतलब ये इतना आसान नहीं होता कि आप थेरेपी में भी किसी को, जिसने अगर फॉर एग्जांपल 20-25 इयर्स अपनी लाइफ में एक चीज देखी हो, इतनी सीरियस इनसिक्योरिटीज देखी हो, तो वो इतनी आसानी से उसकी खत्म नहीं होती। तो इट टेक्स टाइम। एंड यस, आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मैं यही दूंगी कि आपकी अटैचमेंट इनसिक्योरिटीज जो हैं वो आपकी अडल्ट लाइफ को बहुत ज्यादा और आपके रिलेशनशिप्स को जो है वो बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। Right. Since we are already running short on time, so I'll just take one last question. Most of us are medical students here, so we can easily relate with this example. When we give the entrance exam for medical college, that is called the MD-CAT, some of us have experienced it ourselves, and some of us have seen our friends repeating over and over years the exam just in order to get into the medical college of their choice. This is what their families and the society calls perseverance, persistence. So I just want to ask, where lies the thin line between perseverance and holding on unnecessarily to things? Dr. Iram. So basically, when a person is, first of all, we have to understand if it's perseverance inculcated, a value of perseverance inculcated by the family only. क्योंकि माँ की ख्वाहिश थी कि मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर ही बने या बेटियों ने तो डॉक्टर ही बनना है, या फिर उसका अपना भी he or she thinks the same thing. Because a lot of medical students come to me in their third year and fourth year and tell me, okay, this is not what we wanted to do, So basically, पहला $1 million question तो ये होगा शिजा कि वो perseverance inculcated है या उनकी अपनी है. क्योंकि अगर उनकी अपनी है और वो बार बार ही देते जा रहे हैं, तो perhaps then what is on their minds, in the background of their minds is perhaps different. Because उनकी जो इतना वो मेहनत कर रहे हैं, if it's not really bearing the fruit, then perhaps are they giving their best, or are they just making half-hearted attempts to satisfy their parents? Like one of the person who appeared for MCAT, for the MD-CAT, शायद उसको कहते हैं, for the third time around, he said कि मुझे क्या है, मैं तो gap years ले रहा हूँ, तो ठीक है, I'm fine.
I'm pursuing my habits. So first कि वो उनकी inculcated है या अपनी है, और second ये कि मतलब वो उतना effort भी कर रहे हैं कि नहीं. और वैसे भी शिजा मुझे ऐसा लगता है कि letting go जो होती है ना, because medicine is a very noble profession, लेकिन there are so many other choices. I see people wasting years and years to get into a medical कॉलेज और यूनिवर्सिटी. मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसे लोगों को, उनकी फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करके हमें उनकी स्टोरी ना रीस्क्रिप्ट करनी चाहिए. एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रीवेंस स्टोरी का, वेयर यू आर अ विक्टिम कि ओ मैं तो इतनी दफा दिया है, मेरा तो कुछ बन नहीं रहा. और एक होता है कि यू रीस्क्रिप्ट योरसेल्फ, because letting go is the story of a hero and not a victim. That's my take home message from today's this session, that आप perseverance जो है ना, अगर वो बार बार it's not bearing fruit, तो you are compromising your self esteem. और हमारे यहाँ तो हर आजकल पेरेंट्स भी unfortunately बच्चों की तालीम को बैचेस की तरह लगा के पेश करते हैं socially, कि वो लम्स में चला गया, वो किंग एडवर्ड्स में चला गया, etc etc. So I think it's become more of a point of social comparison as well. So I would say that ये अगर वो बार बार हो रहा है और नहीं कामयाब हो रहा, तो वो perseverance मेरे नज़दीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. और why isn't this person exploring options? Life is full of range of experiences. और जब हम बार बार एक ही काम करते हैं तो we call it self-defeating behavior. Because it's self-sabotaging in a way कि बार बार वो काम करना जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है. और letting go इसमें ज़्यादा wise होगी मेरे नज़दीक, क्योंकि I feel that letting go is a journey from moving from the victim mode to the hero mode, right? So you take your decisions and do something else. Absolutely. Thank you for this wonderful take-home message. Over to you, Dr. Urooj. Thank you, Shizat. Shiza, in my opinion, actually, if an individual, as Dr. Iram said again, if the individual is intrinsically motivated to do something, or if an individual is intrinsically motivated to be a doctor, to complete his or her MBBS, तो ठीक है, आप एक दो बार आप उसको जरूर ठीक है कर लो try के. अगर if you fail once, next time for next क्या कहना चाहिए attempt जो है वो, अगर आप उसके लिए अपने आप को मजीद motivated, ठीक है जी मैंने पिछली दफा ये मेरे फ्लॉज थे, आई हैव टू लर्न विद माय फ्लॉज, मैं उसको दोबारा से मेहनत करता हूँ या मैं उसके ऊपर दोबारा एफर्ट पुट इन करती हूँ कि ताकि मैं मेरे जो एरियाज मिस हो गए थे इस दफा मैं उसको फिर ट्राई कर लूँ, देन इट इज ओके. बट इफ आप उसको बिल्कुल वही सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर की तरफ चलेगा, और अगर आपका फेलियर आपकी पर्सनैलिटी को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपकी सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट कर रहा है या आपको किसी डिप्रेसिव स्टेट की तरफ लेके जा रहा है और आप फिर दोबारा उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज, आई थिंक वी शुड लेट दिस गो. और वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ बिसाइड्स MBBS. और बिल्कुल जो, और अगर पेरेंटल प्रेशर है तो बिल्कुल हमें पेरेंट्स को भी ये समझाने की जरूरत है और खुद भी ये समझने की जरूरत है कि इट्स नॉट समथिंग विच इज ओनली थिंग इन योर लाइफ. जिस तरह हमारे पास खासतौर पर साइकोलॉजी में, तो मैं क्लिनिकल के स्टूडेंट्स की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें हमारे पास 60 to 70% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने MD कैट का एग्जाम दिया होता है एंड दे डिड नॉट कंप्लीट दैट एग्जाम. तो फिर वो दूसरे हेल्थ प्रोफेशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाज दफा आप यू वांट टू गो फॉर अ हेल्थ प्रोफेशन, ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मेडिकल की तरफ जाओ. देयर आप अब तो इतनी चीजें आ गई हैं. चलो ये अगर मैं बात करूं आज से 20 या 25 इयर्स बैक या 15 इयर्स बैक की बात करूं तो उस वक्त चीजें लिमिटेड थी. इन लास्ट डेकेड्स अब इतने ज्यादा एरियाज जो है वो ओपन हो गए हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, हाइब्रिड चीजें हैं. तो आई थिंक हमें उनकी तरफ जाना चाहिए. और बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें स्टूडेंट्स या अपनी जो स्टडीज हैं उसको स्टेटस सिंबल ना बनाएं कि जी मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है. बिल्कुल डॉक्टर इरम की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जस्ट
go for another options also. और पेरेंट्स को भी स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए. अगेन मैं वो कहूंगी, इफ यू आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड तो यू कैन अटेम्प्ट वंस और ट्वाइस, बट आई थिंक नॉट मोर देन दिस, क्योंकि ये चीजें आपके लिए पॉजिटिव नहीं है. इट विल इफेक्ट यू अल्टीमेटली एंड यू मे बी वेस्टिंग योर टाइम. और एक चीज और भी है कि हो सकता है आपका एप्टीट्यूड नहीं है. ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि यू मे बी यू डू नॉट हैव दैट एप्टीट्यूड. आपका एप्टीट्यूड किसी और फील्ड में है, आप उसमें शायद उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल दूंगी जिसकी करंटली काउंसलिंग सेशन में वो मेरे पास आ रहे थे एंड ही डिसाइडेड, वो एक सब्जेक्ट में थे जहाँ पे उनकी जो है वो 2 सेमेस्टर्स में उसका CGPA नहीं आ पा रहा था. ठीक है, और अल्टीमेटली ही फेल्ड वंस और 2 कोर्सेज. देन ही डिसाइडेड कि वो अपना program change कर ले. Then he came to management science and there in management science he's a gold medalist. उसका CGPA जो है ना वो क्लास में सबसे ज्यादा होता है. तो you see कि that's depends कि आपका aptitude क्या है, आप कितने motivated हैं किसी चीज को करने के लिए. तो I think in this situation to let go would be a better option. Absolutely. Thank you so very much, Dr. Iram Bukhari and Dr. Urooj Sadiq, for taking out your time for us despite your very busy schedules. Having you tonight with us was an absolute pleasure and honor. We also have with us Ms. Rabia Dasti. Thank you so much, ma'am, for joining us this evening. Can you hear us? Yes, Shiza, thank you so much for this wonderful opportunity. You're doing so good, mashallah. Thank you so Can much, you hear ma'am. me? You're taking out time for us means a lot to us. So, Shiza, I want to add a few points to the already very enriched discussion that has taken place. Sure. One of the things that I want to highlight is to always remember that when you're letting go or forgiving somebody, it is not that you're becoming a doormat. It is not coercion. It is not something which is a reconciliation. It is something that you're doing it by will. And it is your decision, as Dr. Iram pointed out. The thing is that forgiveness, it's always, as Dr. Iram also pointed out, but I think it should be explicitly said also that you should first ventilate. So ventilation of negative emotionality is very, very important, because unless and until you're ventilated and you're cleansed inside, you will not be able to so you'll not be able to have positive emotions unless and until your negative emotions, basically before the decision phase or the work phase, yourself first and then begin the work. Third, there is no point in celebrating abuse. Any abusive relationship should be considered an abusive relationship, and it's more of a social problem rather than a psychological issue. So हम socially उनको support नहीं कर सक रहे, इसीलिए वो इस situation में stuck हैं. Or unless like I believe that otherwise moving out of an abusive relationship is religiously permitted, and it should be socially permitted as well. So that's what some of my reflections are. Maybe Dr. Iram can add something to it, or Dr. I think, Rabia, you very well pointed out. You so as well. Yeah, as always, you know, you, like I always say, you're one of the most intellectually refined persons around me. So you always, you know, add, I think, yes,
these were the things, relevant points that needed to be discussed. And thank you so much for adding them. It's always a pleasure being around you. Thank you so much. May I With add this, something? yes, sure, please. Rabia, I really love your comment that we may be socially unable to support them. और वाकई में ये चीजें हैं कि हम शायद उनको सोशली सपोर्ट कर नहीं पा रहे, करना चाहने के बावजूद हम शायद उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे. That's true, बिल्कुल ये है. I second your thought. Thank you. Thank you, Dr. Urooj. I really wanted to hear your strategies for taking out the virus of what ifs, Dr. Iram, but I think we are running short on time and we should keep it for some other day. It was an extreme pleasure and honor of having Dr. Iram, Dr. Urooj, and Ms. Rabia in one frame. I hope you all got to learn a lot and will apply it in our life.